यस, गुड आफ्टरनून ऑल। चलो, कुछ याद है? आप नहीं थे ना लास्ट लेक्चर, मोक्षी और ये भी था कि नहीं था? ये था मेरे ख्याल से, सौम्या नहीं था। ओके, शैल वी प्रोसीड? क्या किया लास्ट लेक्चर? AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन थियरी पूरा हो गया क्या? सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक हुआ है। वापस एक बार चेक करो। डेफिनेशन हो गया रेवेन्यू का, ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे बढ़ू। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखो इधर, तीन कंडीशंस दिए हैं। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुए, देन वी कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। करेक्ट? फर्स्ट, when seller has transferred what? Risk and rewards. To buyer. For price. सेलर ने क्या ट्रांसफर किया है? ओनरशिप और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। किसका ओनरशिप? गुड्स का ओनरशिप। हाँ, क्लियर? सेकेंड, there is no significant uncertainties there is no significant uncertainty as to measurability of the amount. अपनी भाषा में बोलूं तो amount should be certain. अमाउंट शुड बी सर्टन। करेक्ट? ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए गुड्स का, तो अमाउंट शुड बी सर्टन।
there is no significant uncertainty as to शेयर है कलेक्शन शुड बी सर्टन. मैं सेल का रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज कर सकता है व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू द बायर. अमाउंट शुड बी सर्टन एंड कलेक्शन शुड बी सर्टन मीन्स देर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी एज टू कलेक्टेबिलिटी ऑफ द अमाउंट. पैसा मिलने वाला है कि नहीं वो अनसर्टन नहीं होना चाहिए. पैसा मिलने वाला है वो सर्टन रहेगा तो ही वी कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. डू यू अग्री विद दिस? सो ये तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होगा देन वी कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स. देन वी कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स. डू यू अग्री विद दिस एवरीबडी? बोलो यहां तक क्लियर? तीन कंडीशन क्लियर? चलो इधर सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो. एक लिखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स is delayed on buyer's request. Delivery of goods delayed on buyer's request. Correct? Next line. Revenue should be recognized immediately. Revenue should be recognized immediately if collection is certain. If collection is certain. Yeah, clear? एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनो इधर. मस्त एग्जाम्पल है. एक कस्टमर का कॉल आया. कस्टमर बोलता है I am giving you 1 lakh rupees advance. Every month 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 का गुड्स मुझे सेंड करना. तो 1 लाख एडवांस मिला. एंट्री क्या आएगा?
सॉरी, मतलब सेल कभी एडवांस मिला तभी हम लोग सेल रिकॉग्नाइज कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट। आप बोल रहे हो 1 लाख का रेवेन्यू जब भी ऑर्डर आया तभी बुक कर देने का। सो बैंक टू एडवांस एंट्री किया, फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, 25,000 के गुड्स रेडी हो गए और हमने सेंड किए। बोलो अभी क्या एंट्री करेंगे? एडवांस टू सेल्स। सेकेंड मंथ 25,000 के गुड्स, अगेन वी मैन्युफैक्चर्ड, केप्ट इट रेडी एंड वी सेंट इट, एंट्री एडवांस टू सेल्स। थर्ड मंथ वी मैन्युफैक्चर गुड्स, वी केप्ट इट रेडी, बट कस्टमर का कॉल आया कि डू नॉट सेंड गुड्स अंटिल फर्दर नोटिस, हमारे इधर गोडाउन में फ्लड आया है। समझता है नहीं समझता? गोडाउन में क्या आया? फ्लड आया है। समझा? हेलो, थर्ड मंथ का गुड्स भेजा नहीं है हमने, वी मैन्युफैक्चर्ड, वी केप्ट इट असाइड एंड उसको हमने इनवॉइस भेज दिया, बिल भेज दिया, ही एक्सेप्टेड द बिल। सब ऑनलाइन होता है आजकल तो। फोर्थ मंथ ऑल्सो सेम, वी मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर हिम, वी केप्ट इट असाइड and title is transferred, invoice is given. Now question is about third and fourth month. थर्ड एंड फोर्थ मंथ का 25-25 हज़ार, मतलब 25,000 50,000 का सेल रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिलीवरी इज डिलेड ऑन buyer's request, revenue should be recognized immediately if collection is certain। बोलो कलेक्शन सर्टन है कि नहीं? इसमें सर्टन है। अमाउंट भी सर्टन है? सर्टन है। ओनरशिप ट्रांसफर किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, बिल बन गया उसके नाम पे, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, फिजिकल डिलीवरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। अग्रीड? या सो थर्ड एंड फोर्थ मंथ का भी सेल रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई डाउट? पक्का? मोक्षी ध्यान है क्या? यहां तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एंड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ना आपने? हाँ, अभी सेकंड में आ जाओ, आपका टाइमलाइन चेक करो ना, टाइमलाइन में क्या क्या था। पहले डेफिनेशन था रेवेन्यू का, एरियाज टू बी कवर्ड था ना, पहले क्या था? डेफिनेशन था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया हमने, ये दोनों लास्ट लेक्चर में किया था आई थिंक सो, करेक्ट। उसके बाद इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो अभी हमने करना था, फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस और फिर यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस, ये अभी हो जाएगा। रेंडरिंग ऑफ सर्विस को 10-15 मिनट लगेगा, यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस को भी 10-15 मिनट, मतलब हाफ एन आवर में स्टैंडर्ड का थियरी हो जाएगा। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को 1.5 आवर to 2 आवर्स के बीच में टाइम लगेगा, डिपेंड्स। क्लियर? लिखो। Revenue recognition in case of rendering of services. There are two methods. Okay, who provides services? Who will provide services? बोल सौम्या, मन में क्या आया तेरे? सर्विस कॉस्टिंग चालू हुआ लगता है। हाँ, वो विल प्रोवाइड सर्विसेज। कम ऑन, प्रोफेशनल्स कौन रहेंगे? लॉयर, चार्टर्ड्स, डॉक्टर्स,
इंजीनियर्स, बोलना है ऐसा सर. Who will provide services? Service provider. Wow. Who will be there in service providing industry? That is the question. Understand the substance यार, come on. वर्ड से खेल रहा है मेरे से. Anyways, now we are fine ना. बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग हो गया. चलो, anyways, मजा आया. ये देखो थके ही बैठी है, अब तक थकान नहीं उतरा है उसका. पढ़े कुछ आस्था जी? यस. ओके, टेल मी. माय पॉइंट इज सर्विस इंडस्ट्री वाले सर्विस रेंडर करेंगे. लॉयर, चार्टर्ड, आई कैन से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन दे विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. तो दो मेथड है. कौन सा दो? क्या लिखा? कंप्लीटेड सर्विस मेथड, proportionate completion method. बरोबर है. कंप्लीटेड सर्विस मेथड मतलब सर्विस कंप्लीट होने के बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मतलब परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस पे, जितना जितना काम होते जाएगा उसके बेसिस पे रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड. आई कैन से दैट कंप्लीटेड सर्विस मेथड. एक एग्जांपल देता हूं, सुनना. डॉक्टर्स, आप डॉक्टर के पास गए, करेक्ट, यू आर नॉट फीलिंग वेल, उसने सर्विस दिया, चेक किया, मेडिसिन दिया, आपने 500 रुपीज़ का उसको सर्विस चार्जेस पे किया. अग्रीड? बोलो, वो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेगा? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ सर्विसेज. द मोमेंट सर्विस कंप्लीट हो गया, ही कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू. यस और नो? चलो, हॉस्पिटल है डॉक्टर का, एक पेशेंट आया, हॉस्पिटलाइज हुआ, उसका सर्जरी हुआ, उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, उसने पैसे पे कर दिए. डॉक्टर रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेगा? कंप्लीटेड सर्विस, जैसे सर्विस कंप्लीट होएगा ही कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. बराबर है? बोलो सर. तो परसेंटेज कंप्लीशन कभी आएगा? कोर्ट में केस चालू है, इंडियन कोर्ट्स है, सालों तक केस चालू रहते हैं, है कि नहीं? सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन सुनना अच्छे से. लॉयर चार्ज कैसे करते हैं केसेस में? पर आवर, पर डे, पर हियरिंग और पर एनम बोलता है. क्या मेरे को बोलो ना आस्था, क्या बोल रहे हो? कैसे हो? अरे वो तो मीटिंग का कंसल्टेंसी का बात कर रहे हो. अरे वो बेटा घर पे स्टडी करेगा कि नहीं करेगा वो केस का, वो भी काउंट करेगा. आई डोंट अग्री विथ पर आवर, आई अग्री विथ पर हियरिंग और लमसम. कंसल्टेंसी में पर आवर मतलब कंसल्टेंसी में कैसा रहता है कि फीस रहता है. डॉक्टर के पास जाएंगे, सबका अलग अलग, मतलब जो ज़्यादा बीमार है उसका ज़्यादा लेने का, कम बीमार है उसका कम लेने का, ऐसा होता है. कंसल्टेंसी फीस ऑलवेज फिक्स्ड होता है, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर क्लाइंट. और स्लॉट दिया रहता है.
लॉयर इज वेरी प्रोफेशनल. मेरे घर पे 3 लॉयर हैं, सच्ची बोल रहा हूँ. वी नो वेरी वेल. कंसल्टेंसी फीस होता है. केसेस में 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर पर हियरिंग और लमसम अमाउंट. लमसम अमाउंट ले लेते हैं 2 लाख रुपया पूरे केस का. एंड हमने ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में लड़े रहते हैं, तो हमें पता है कि कितना हियरिंग लगने वाला है. टुकड़े टुकड़े मिलेंगे. लमसम है तो उसको बोलेंगे भाई देख, हर महीने मेरे को 50-50 हज़ार रुपया दे देना. खत्म. डिपेंड्स क्लाइंट कैसा है. अभी करोड़ों का केस है तो 2 लाख देने को उसको प्रॉब्लम नहीं होएगा. करेक्ट. बाकी हियरिंग वाला रहेगा तो पहले पैसा लेते हैं या पहले हियरिंग में जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट. भरोसा है तो पहले हियरिंग में जाके आते हैं, फिर बिल बना के भेजते हैं. भरोसा नहीं है तो पहले पैसा दे, बाद में हियरिंग के लिए जाऊंगा. नॉर्मली लॉयर से कोई लड़ता नहीं है, नहीं तो वही केस कर देगा क्लाइंट. करेक्ट. एंड आई होप यू ऑल नो, एक लॉयर के पास गए फिर उधर से दूसरे के पास नहीं जा सकते. वो लॉयर एनओसी नहीं देगा तब तक दूसरे के पास नहीं जा सकते. करेक्ट. एनीवे, नहीं तो कैसा होगा, अलग अलग डॉक्टर का कैसे होता है वैसे होएगा. फिर मालूम पड़ा एक लॉयर इधर भी केस लड़ रहा है, दूसरा लॉयर उधर केस लड़ रहा है. नहीं, कंसल्ट नहीं, केस का बात कर. कंसल्टेंसी तो इज टेकिंग ओपिनियन. यू कैन टेक ओपिनियन फ्रॉम एनीबडी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. एनीवेज, माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, इफ यू आर चार्जिंग लम सम अमाउंट इन केस ऑफ लॉयर, देन वो लॉयर का जो 2 लाख रुपया लिया, रिकॉग्नाइज कैसे करने का. सो ऑन व्हाट बेसिस? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन बेसिस, परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. करेक्ट. अंदाज से उसको पता है ये केस अभी 2 साल चलने वाला है, तो वो अकॉर्डिंगली हाफ अमाउंट दोनों साल में रिकॉग्नाइज कर देगा. क्लियर. लिखो इधर, राइट इन कंप्लीटेड सर्विस मेथड. अंडर दिस revenue should be recognized on performance of a single act. मतलब जो एक एक्टिविटी का पैसा लिया है, वो एक्टिविटी कंप्लीट होगा, यू कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. क्लियर. इसमें लिखो, अंडर दिस revenue should be recognized on percentage completion basis. दोनों में there are three conditions given. In that second and third conditions are same. Second and are same. जो भी डिफरेंस है वो किधर है? फर्स्ट कंडीशन.
कंडीशन नंबर 1, देखो इधर, रेवेन्यू should be recognized on completion of act, single act you can say. सेकेंड एंड थर्ड कॉमन है, जो पहले था वही है. देर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी, देर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी as to measurability of the amount ब्रैकेट में, that means amount should be certain. Number 3, there is no significant uncertainty as to collectability of the amount. Bracket, collection should be certain. समझाइए. Here first, revenue should be recognized on percentage completion basis. Second and third same है. There is no significant uncertainty as to collectability of the amount and measurability. दोनों लिख दो. Second and third same है. Clear everybody? Done? हमने एक एसी सेल किया, 50,000 का एसी है. कैन आई से द सेल ऑफ गुड्स, और वो इंस्टॉल करने का 5,000 रुपीज चार्जेस है. Can I say installation charges is for rendering of services? बराबर है. तो एसी का 50,000 का भी रिकॉर्ड करना चाहिए. जब ये ओनरशिप ट्रांसफर किया, सेल ऑफ गुड्स होएगा तभी. और इंस्टॉलेशन चार्जेस इस सर्विस कभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए. इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा उसके बाद.
It is continuous activity or one time activity? One time activity. So on completion of that activity we can recognize revenue. Simple है, कुछ है नहीं से. Clear? Last, चलो ध्यान दो फटाफट. Use of enterprise resources by others. मीनिंग समझते हैं इसका? हमारे रिसोर्सेस कोई और यूज कर रहा है. रिसोर्स मतलब एसेट्स. Our assets are used by others, so we can earn what on that? Interest, royalty or dividend? बोलो. Interest is our income. कौन से बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? बराबर बोलो. अप्रूवल. सौम्य सिंह. रिसिट बेसिस. इधर उधर. इंटरेस्ट कौन से बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे यार? कम ऑन बोलो. स्टैंडर्ड ने लैंग्वेज यूज किया है ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस, which is actually accrual. For interest we always consider number of months because interest rate is per annum. Normally it is per annum. Then we consider number of months. So it is on time proportion basis. रॉयल्टी बोलो. दो. नहीं बताओ कौन से दो बेटा? वो तो पे किया वो होता है बेटा. इधर तो रिसिप्ट का बात चालू है, इनकम का बात चालू है, रेवेन्यू का बात चालू है. कोई भी रहेगा. रेवेन्यू ऑन प्रोडक्शन रहेगा कि रेवेन्यू ऑन सेल्स रहेगा, और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन रहेगा कि रॉयल्टी ऑन सेल रहेगा. मेरा तो रेवेन्यू ही है ना, वो मेरे लिए तो इनकम ही है. मतलब ऑन व्हाट बेसिस इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड? रिसिप्ट बेसिस. मोनिल. आस्था. सुनाई नहीं दिया. रिसिप्ट. नेबर. हियर एक्चुअल मतलब रिसिप्ट ही हुआ ना मैम? नो क्लू. मिलेगा तभी. हाँ. रॉयल्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस. आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी क्यों रिकॉर्ड नहीं करने का? मेरे को करंट ईयर में थोड़ा ज्यादा रॉयल्टी मिल गया है तो प्रीपेड क्यों माइनस नहीं करने का? एक एग्जांपल देता हूं. अपना एक रेस्टोरेंट है. ये रेस्टोरेंट ब्रांडेड रेस्टोरेंट है, लाइक भारत कैफे. अच्छा खासा चलता है. भारत कैफे सुना है? नहीं सुना? घाटकोपर वेस्ट में जवानों क्या रे
स्टेशन के सामने इतना रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट है, वो देख लो जाके से कम रोज 50,000 का नोट कमाता है, 50,000 पर डे मिनिमम। क्या बोल रही है? एनीवेज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, भारत कैफे अपना एक रेस्टोरेंट है। मैंने ये रेस्टोरेंट किसी को चलाने के लिए दिया है, टू ऑपरेट द रेस्टोरेंट आई हैव गिवन दिस रेस्टोरेंट टू समबडी, दैट पर्सन इज रनिंग दिस रेस्टोरेंट ऑन माय बिहाफ एंड आई एम चार्जिंग 10 लाख रुपीज फॉर दैट। बराबर है? आउट ऑफ 10 लाख रुपीज पर मंथ, आउट ऑफ 10 लाख I can say 10 lakh rupees he had given every month, 12 महीने का देना चाहिए। करंट ईयर में he had given only for 11 months। बोलो 1 month आउटस्टैंडिंग कंसिडर करने का कि नहीं करने का? करने का, नहीं करने का? तो वो अक्रूवल हो गया ना, फिर रिसिप्ट में तो तुम 11 मंथ्स ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। अरे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कंसिडर किया मतलब यू आर फॉलोइंग अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। यस और नो? तो माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन, रॉयल्टी विल बी रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट बेसिस, कि जब भी पैसा मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, कि जब भी अक्रू होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे? अक्रू होगा। अरे रॉयल्टी इज नथिंग बट रेंट ऑन इंटेंसिबल एसेट। नॉर्मल रेंट इज रेंट ऑन टेंजिबल एसेट्स, दिस इज रेंट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। होटल का प्रीमाइसिस वगैरह सब मेरे नाम पे है, मैंने उसको मेरा ब्रांड चलाने के लिए दिया। आई विल चार्ज रॉयल्टी। गया के गया? विच बेसिस? बोलो। डिविडेंड। पहले सुना है डिविडेंड? मोनेल, व्हाट इज योर ओपिनियन? ट्रैकिंग के बाहर आया नहीं लगता आपको? क्या सोच रहे हो? तो बोल, उसके लिए क्या सोच रहा है? थॉट क्या आ रहा है तेरे माइंड में? वो बोल। हाँ, डिक्लेरेशन तेरे को। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? बरोबर है, बोल। AS 13, वेरी गुड। बोल, AS 13 में क्या दिया है? व्हाट इज गिवन इन AS 13? डिविडेंड का बात कर रहा है तो तू इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है। वो AS 13 में दिया है, तो इधर क्या दिया है? उनका ही कम है, मालूम है? आपका क्या ओपिनियन है? जैनिल करेक्ट? हाँ। क्या? वो ठीक है, तो AS 13 का रेफरेंस क्यों दे रही है? उसमें था तो वो क्या था? डिविडेंड एसेट था। हाँ, ऐसा लग रहा है तू ट्रैकिंग पे गया, दिमाग ऊपर छोड़ के नीचे भाग के आया है। दिमाग को बोला रख, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तभी लेके जाऊंगा। सर मेरे पास 2 है घुटनों में। बोलना तो क्या है? AS 13 करता है, पूरा बोल। क्यों सोच रहा था ना तू इतना? अरे बोल, अभी कोई आया नहीं है, तेरे को ही लेगा ना, और क्या। सुनो, AS 13 talks about how to recognize dividend, how to record dividend. If it is pre-acquisition, it will be credited to investment account. If it is post-acquisition, it will be credited to P&L account. So how to record dividend is given in AS 13. When to record dividend is given in AS 9.
When to record dividend is given in AS9. ए सुन इधर मोनिल हंस मत, आधा आधा बात करता है। अरे बट तेरे को पता ही नहीं था, तू क्या बोल रहा था। AS13 में सर प्री पोस्ट सिखा, बट वो क्या है? मैं थोड़ा गाइड कर रहा था, दिमाग उधर रख के आया, क्या करूं? बोल, क्या बोला वही बोल। क्या कहा दिया ये, कहाँ दिया? AS13 में दिया है कि हाउ टू रिकॉर्ड डिविडेंड। तो दो टाइप के डिविडेंड है उसमें, प्री एंड पोस्ट, बरोबर है? ओके। AS9 में क्या दिया है? हाउ टू रिकॉग्नाइज। जाइने ले उसको थोड़ा। When to recognize is given in AS9. How to recognize is given in AS13. इतना तो बोल रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं ना पहले ऊपर छोड़ के आया वो दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड है मोनिल, तेरे को अलग मोड में तू आज परेशान करना है नहीं। चलो आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड। डिविडेंड में लैंग्वेज क्या दिया है सुन लो। व्हेन टू रिकॉग्नाइज डिविडेंड, ये लिखना पड़ेगा। व्हेन राइट्स टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। व्हेन rights to receive dividend is established। बोलो, राइट्स कभी एस्टैब्लिश होंगे? when dividend is declared. After declaration, company cannot back off for paying of dividend. Correct? So our rights will be established on declaration basis. ये समझा? What do you mean by final dividend? बोलो बराबर है। Last year dividend is received in current year is called as final dividend. Interim dividend, current year dividend received in current year is called as interim dividend. Do you agree? Final dividend will be recognized on declaration basis. Interim dividend will be recognized on receipt basis. सच बोलो, समझा क्या एवरीबॉडी?
पक्का? अगर फॉरेन करेंसी से इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता रहेगा, फॉरेन करेंसी से इंटरेस्ट डिविडेंड फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन कंट्री से अपने को डॉलर्स में इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता रहेगा, तो रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करना। क्लियर? लिख लो नोट। इफ इंटरेस्ट और डिविडेंड is received in foreign currency from foreign country, then it should be recognized on receipt basis. Clear? एक और पॉइंट डिस्कस करना है। मैंने गुड सेल किया। क्या सेल किया? मैंने गुड सेल किया, उसके बाद पता चला कि वो डेटर है ना, वो पैसा नहीं देने वाला है। क्या करने का? सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ अब तक, क्या करने का? सुबह मैंने सेल किया, इवनिंग में रिकॉर्ड करने गए, उसके पहले पता चला कि पैसा यार डाउटफुल लग रहा है। रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? रिकॉर्ड नहीं हुआ है अब तक, रिकॉर्ड करूं सेल कि रिकॉर्ड नहीं करूं? रिकॉर्ड करने का, नहीं करने का, बिकॉज कलेक्शन इज अनसर्टन। वही तो कंडीशन है सेल ऑफ गुड्स का। देख, थर्ड कंडीशन, सेल रिकॉर्ड कभी कर सकते हैं, अमाउंट सर्टन होना चाहिए, कलेक्शन सर्टन होना चाहिए। आपने सेल तो कर दिया बट कलेक्शन अनसर्टन दिख रहा है अभी, डू नॉट रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड हो गया रहेगा तो रिवर्स करो, बोलो। आरडीडी क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड। लिखा हुई है कि समझेगा? लिखना है, लिख लो।
Done. सेल रिकॉर्ड नहीं करने. Sorry. We cannot recognize revenue. You can say stock with customer. सेल और रिटर्न में कैसे करते थे? मतलब स्टॉक विद कस्टमर तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा ही. तुम सेल रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट सोचो, सेल रिकॉर्ड नहीं करता है तो अनसोल्ड होता है, क्लोजिंग स्टॉक में आता है. बट ये अपना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है, तो स्टॉक विद कस्टमर. क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे स्टॉक विद कस्टमर. अनसोल्ड है कि सोल्ड है? तो अनसोल्ड है तो उसको ऐड करेंगे. अभी कस्टमर देने वाला है पैसा कि नहीं देने वाला है, वो डाउटफुल है. मिल गया तो सेल रिकॉर्ड कर देंगे. अभी मत करो. इन शॉर्ट रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करने का. क्लियर? दैट्स इट. क्या कंप्लीट किया बोलो? थियरी हो गया. किसका थियरी था ये? चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो इनका. तो आया रहेगा सबको, आया नहीं आया? फर्स्ट वाले का आंसर दो. वाई कंपनी लिमिटेड यूज्ड सर्टन रिसोर्सेस ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड. वाई यूज कर रहा है एक्स के रिसोर्सेस. रिसोर्सेस मीन्स एसेट्स. इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव्ड 10 lakhs and 15 lakhs for interest and royalty during the year 2005-06. You are required to state whether on what basis this revenue can be recognized. बोलो, interest on what basis? Time proportion and royalty accrual. That's it. पढ़ लो आंसर. Interest on time proportion basis, royalty on accrual. Read this particular answer. Entire standard is theoretical standard. Close your notebook, open your textbook. कुछ लिखना नहीं. सारे आंसर्स प्रिंटेड है. बट तुम ऑनेस्टली ध्यान देगा और आंसर मेरे को ओरली पहले बताएगा, बाद में रीड करने का. याद रख पाएगा तू? तो पहले ही बोला पैराग्राफ बायट नहीं कर. कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में करेंगे तो बात अलग है. डन. Question number 2. Shall I read? X Limited has recognized what? Come on. 10 lakhs on accrual basis income from dividend on units of mutual fund.
ये डिविडेंड इनकम कौन से बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया? अक्रूवल। अलाउड है, नॉट अलाउड? डिविडेंड कैसे रिकॉग्नाइज होगा? when rights to receive dividend is established, that is declaration basis. म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड मिला कितना है? Sorry, I don't know what song this is. म्यूचुअल फंड पे 10 lakhs का डिविडेंड मिला है. 50 lakhs rupees was the face value. करेक्ट. ईयर एंडिंग क्या है? 31st March 2003. करेक्ट. The dividend on mutual fund were declared at 20% on 15th April. Declare किया 15th April. The dividend was proposed on 10th March by mutual fund. बोलो, डिविडेंड प्रपोजल बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए कि डिक्लेरेशन? So 15th April 2003 means it should be recognized in 2-3 or 3-4. को मेरा लैंग्वेज ही नहीं समझता है. 2002-3 के 3-4? 15th April को रिकॉर्ड करेगा तो 3-4 ही होएगा ना यार. डिक्लेयर हुआ है 15th April, so it should be recorded on 15th April 2003, that is 2003-4 is our accounting year. In that year dividend should be recognized. Whether the treatment is as per relevant accounting standard, you are asked to answer so and so. पढ़ लो. पढ़ा. In the given case, dividend is proposed on 10th March, where it is declared on 15th April 2003. Hence, the rights to receive dividend is established on 15th April. As per the above mentioned paragraphs, income from dividend on units of mutual fund should be recognized by X Limited in the financial statement ended on 31st March 2004. The recognition of 10 lakh rupees dividend on accrual basis in 2-3 is not as per AS line. बराबर है? पक्का? Have you understood 2 questions? चल, read question 3. Don't read answer, just read question 3, think about it, then I will discuss.
चलो सुनो इधर, 31 मार्च 2007 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, दैट वी विल इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। बराबर है, सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली 31 मार्च को मीटिंग हुआ तो प्राइस कभी से बढ़ाना चाहिए, 1 अप्रैल से, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली बढ़ाना चाहिए। बट डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज सेल्स प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम जनवरी टू मार्च। व्हाट दे आर सेइंग कि पास्ट में जो लास्ट 3 महीने में भी सेल हुआ है ना, इन लास्ट 3 मंथ्स वॉट एवर सेल इज डन नो, उसमें भी रिवाइज्ड इनवॉइस भेजो कस्टमर को और इंक्रीमेंटल प्राइस चार्ज करो। बोलो, और उसके कारण क्या हुआ मालूम है, वी विल हैव एडिशनल रेवेन्यू ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख है ना, बोलो ये 5 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कि नहीं करने? हाँ, मतलब पॉइंट इज कि वी हैव सेंट रिवाइज्ड इनवॉइस टू द कस्टमर। व्हाट इज नॉट सर्टेन, collection is uncertain. We don't know whether they will accept revised invoice and whether they will pay us that additional amount or not. So logically revenue of that 5 lakh should, ऐसा नहीं बोलने का, revenue recognition should be postponed till the time of collection. We have to assess what ultimate certainty about collection of the amount. ये कलेक्ट होगा कि नहीं होगा वही अनसर्टन है, तो ये 5 लाख का तो रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए आज। फ्यूचर में कलेक्ट होगा तो रिकॉर्ड करो। अग्री? ये बोलो, पढ़ो। As per AS9 revenue recognition, the additional revenue on account of increase in sales price with retrospective effect as decided by Board of Director X Limited of rupees 5 lakhs to be recognized as income for 2006-07 only if the company is able to assess the ultimate collection with reasonable certainty. If at the time of raising any claim it is unreasonable to expect ultimate collection, the revenue recognition should be postponed. समझा कि नहीं समझा? 1 2 3 क्लियर, 4th पढ़ो। अर्जुन लिमिटेड, योगा चालू है देखना उसका। अर्जुन लिमिटेड सोल्ड व्हाट मोक्षी? फार्म इक्विपमेंट। सोल्ड व्हाट? गुड्स। अरे फार्म इक्विपमेंट। सो अर्जुन लिमिटेड सोल्ड फार्म इक्विपमेंट्स। ये डायरेक्ट बेचता है फार्मर को कि थ्रू डीलर्स? One of the condition at the time of sale was payment should be made within, otherwise 15% per annum interest will be levied. Understood that? Yeah. The company was not realized this type of interest from the dealers in the past.
So we have never realized this type of interest from the dealers in the past. कैसा होता है मालूम है, लाइफ में कोई भी बिजनेस करते हैं ना, वो रिलेशंस पे होता है। हम इनवॉइस में लिख के दे दिया है 14 डेज में पेमेंट करना, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट डीलर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन है ना, कभी वो 18 दिन में पे किया, कभी 20 दिन, कभी 1 महीना, तो भी हम इंटरेस्ट चार्ज पास्ट में कभी नहीं किया है, क्योंकि बिजनेस रिलेशंस पे होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, करेक्ट? सुनो आस्था जी, क्या यार एग्जाम्पल पे भी हंसती है तुम्हें। However, for the year ended 31st March 2015, it wants to, it मतलब Arjun Limited. Arjun Limited wants to recognize interest due on the balances due from the dealers. Arjun Limited wants to recognize this type of interest in its P&L on accrual basis. The amount of interest is 9 lakh. Decide whether the income by way of interest from dealers is eligible for recognition as per AS9. ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नॉर्मली इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड होता है? टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, बराबर है। अक्रूवल होता है, टाइम प्रपोर्शन मतलब अक्रूवल, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। डू यू अग्री? हियर इंटरेस्ट इज ऑलरेडी अक्रूड, बट शुड इट बी रिकॉर्डेड? अमाउंट सर्टन है, अमाउंट सर्टन है 9 लाख। कलेक्शन सर्टन है नहीं, क्योंकि पास्ट में ऐसा इंटरेस्ट कभी नहीं मिला है हमको। तो कलेक्शन इज नॉट मतलब कलेक्शन इज अनसर्टन। वी हैव टू असेस द अल्टीमेट पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट इंटरेस्ट। इफ कलेक्शन इज सर्टन, इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, अदरवाइज डू नॉट रिकॉर्ड इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? नॉर्मली कौन से बेसिस पे होता है? अक्रूवल, टाइम प्रपोर्शन बेसिस। पढ़ो, एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking. What is lacking? Ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim. Revenue recognition should be postponed to the extent of uncertainty inverted. Uncertainty उल्टा नहीं हो जाए, मतलब सर्टन हो जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कलेक्शन, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। In such cases, the revenue is recognized only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. In this case, the company never realized this type of interest for the delayed payment in the past by the dealers. Hence, it has to recognize the interest only if the ultimate collection is certain. The interest income hence not to be recognized. कुछ समझा? पक्का? क्वेश्चन 4 तक क्लियर एवरीबॉडी? बोलो। फोर तक क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 5, ये नहीं आया ना, पटके पढ़ो। मोक्षी पढ़ो। बोलो, एग्जाम्पल याद आया? बोलो, एडवांस कितना मिला? बोलो, 1 लाख एडवांस रिसीव्ड, करेक्ट? एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, सेल इज मेड, करेक्ट? एंट्री, advance account debit to sales account. What about third and fourth month? Goods are not dispatched on buyer's request. Should we recognize third and fourth month sale? Yes.
Physical delivery is not important. Ownership transfer is important. Billing is made. Title is accepted by the customer. Just delivery is not made on buyer's request. Revenue should be recognized immediately. For which period? Third and fourth month. First, second का तो already recognize हो ही गया. Question is not about first and second month. Question is about what? Third and fourth month. So 50,000 का रेवेन्यू फर्स्ट एंड सेकंड का तो रिकॉग्नाइज हो गया है, थर्ड फोर्थ का रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू. अग्रीड? ये समझा? 5. एक बार पढ़ लो, आंसर पढ़ लो. पढ़ा? ये समझा? याद रहेगा? एग्जाम के क्वेश्चन है ये सब, याद रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन. ये हमने डिस्कस किया था, मेरे साथ रहना. मेसर्स मून लिमिटेड sold goods worth rupees 6,50,000 to Mr. Star. Correct? Mr. Star asked for a rate discount 53,000. Same was agreed by Messrs. Moon Limited. The sale was effected and goods were dispatched. On receipt of goods, Mr. Star has found the goods worth rupees 67,000 are defective. Mr. Star returned defective goods to Messrs. Moon Limited and made payment of rupees 5,30,000. Clear? The accountant of Messrs. Moon Limited booked the sale for 5,30,000. Discuss the contention of the accountant with reference to accounting standard 9. मेरे को सोच समझ के आंसर देना. कितने का सेल किया? क्वेश्चन किसके ऊपर है? कितना सेल रिकॉर्ड करना चाहिए उसके ऊपर है. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू? परफेक्ट. रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स. यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड. बराबर है? पक्का? तो पहले रेवेन्यू का डेफिनेशन लिखने का. वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू. देन टेल मी हाउ मच वाज, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड? 6,50,000. करेक्ट. रिकॉर्ड कितना करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करे भी ना? डिपेंड्स. Trade discount is in ordinary course of business or not in ordinary course of business?
अगर ट्रेड डिस्काउंट ऑर्डिनरी कोर्स में है तो क्या करेंगे? ऑर्डिनरी कोर्स में है तो 6,50,000 माइनस 53,000 we will have 5,97,000 rupees का सेल and that will be recorded. And if trade discount is not in ordinary course of business तो 6,50,000 का सेल रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को P&L में डालेंगे. ये सब डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हुआ था. See, if you are not coming, I am not going to question that, but at least you should read and come or complete your notebook and come. Correct? Anyway, यहाँ तक क्लियर? सो मेरे को बोलो दो ऑप्शन क्या है? इफ ट्रेड डिस्काउंट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स तो 6,50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 53, 5,97,000 का सेल रिकॉर्ड करेंगे. एंड अगर ट्रेड डिस्काउंट नॉट इन ऑर्डिनरी मतलब सबको नहीं देते हैं तो फिर वो ट्रेड डिस्काउंट P&L में जाएगा एंड सेल ग्रॉस वैल्यू 650 पे दिखेगा. सेल्स रिटर्न का क्या करने का? वो सेल्स में से माइनस करके सेल बताएंगे कि इट शुड बी शोन सेपरेटली. सेल्स रिटर्न का अकाउंट सेपरेट बनता है, सेल्स अकाउंट में डेबिट नहीं होता. इट विल बी अ सेपरेट अकाउंट जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस वी डिडक्ट इट फ्रॉम सेल इन ट्रेडिंग अकाउंट. आगे गया पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? क्या तक क्लियर? पढ़ो. क्लियर एवरीबॉडी? बोलो. क्वेश्चन 6 तक समझा सबको? सच्ची में? 7 वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन. एक बार आप रीड करो देन वी विल प्रोसीड. पढ़ा? Tell me now. Like we are Chroma. We have sold 2 machines. Correct? एक machine, let us say laptop. Other one is AC. बरोबर है? Now machine 1 जो मैंने सेल किया ना, that is very easy to install. तो वो बायर खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं. दे कैन स्टार्ट यूजिंग दैट मशीन. एंड व्हाट अबाउट मशीन 2? तो मशीन 2 रिक्वायर स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन लाइक एसी आके हम चालू नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स सम इंस्टॉलेशन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड. बराबर है? अभी मेरे को बोलो
Machine 1 and machine 2 both are sold on 31st March. Both are sold on 31st March. But machine 1 will be installed by customer's employee itself. Machine 2 will be installed by special technical team. That installation will be carried out after 2 to 5 days. Barber, correct? When can we recognize revenue for machine 1? Machine 1, can I say 31st March we can recognize revenue because on 31st March we have sold that machine. What about machine 2? For the year ended 31st March 2021, KY Enterprises has entered into the following transactions on 31st March 2021. बराबर है? KY supplied what? 2 machines to its customer ST. Both machines were accepted by ST on 31st March 2021. समझा कि नहीं समझा? Machine 1 was a machine that was routinely supplied by KY to many customers, and the installation process was very simple. यहाँ तक clear everybody? Machine 1 was installed on 2nd April by ST's employees. Machine 2, being more specialized in nature, requires an installation process which is more complicated. समझा? Requiring significant assistance from what? KY. Machine 2 was installed between 2nd and 5th April. Details of cost and sales price are as follows. Machine 1, machine 2. कितना है sales price? And इसका 3 lakh. Cost of production 160, 150. Installation charges इसका nil because this can be installed by customer's employee itself. And this is for machine 2. How should above transaction be recognized by KY Enterprises for the year end date 31st March 21? बोलो कैसे रिकॉर्ड होगा? दोनों मशीन एक्सेप्ट हो चुका है, सो मशीन 1 and 2 both will be recognized on 31st March. बराबर है? What about this installation charges? This installation services will be performed when? Between 2nd to 5th April. So this installation charges should be recognized on 5th April after completion of that services. Understood? Hello? Answer पढ़ो. रीड किया ये 10,000 कभी इंस्टॉलेशन चार्जेस रिकॉग्नाइज करेंगे नेक्स्ट ईयर 5th अप्रैल. बराबर है? क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ेगा, सुना. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इन मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? फाइन पेपर रोल्स. मतलब ये कंपनी क्या बनाता है? फाइन पेपर रोल्स. डेट 15 जनवरी रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने का था? और एनआरवी कितना है? 80. 20th जैन पल्प WIP 1 कितना हो गया? और एनआरवी कितना है? 1,20,000. अग्रीड. व्हाट इज 120? कॉस्ट ये क्या लिखा है? मतलब ये 120 में 1 लाख इंक्लूड है कि नहीं? दैट इज कॉस्ट अप टू डेट. बराबर है? 27 जनवरी रफ एंड थिक पेपर WIP 2 मैन्युफैक्चर. हाउ मच? 150. समझा? NRV 180. 15 Feb फाइन पेपर रोल्स
180, 350. 20th February ready for sale 180, 350. Cost ये 180 क्या है? Up to date market value 350. 15th March sale agreed and invoice raised 2 lakh. Invoice raised 350. 2nd April goods delivered 2 lakh 350. बोलो सेल का भी रिकॉर्ड कर. डेट बोलो अभी क्या है? 15 मार्च को सेल रिकॉर्ड करना चाहिए. एक्सप्लेन द स्टेज ऑन विच यू थिंक रेवेन्यू विल बी जनरेटेड. करेक्ट. एंड स्टेट हाउ मच वुड बी नेट प्रॉफिट. बोलो नेट प्रॉफिट कितना? कॉस्ट 2 लाख, 350 तो 150 का नेट प्रॉफिट. समझा? टाइम पास. क्लियर? ये ऐसा सब एग्जाम में आया है. ये सारे कंपाइलर के क्वेश्चन है. पढ़ के लगेगा सर ये क्या दे दिया हमको तो समझा ही नहीं. बट इफ यू विल रीड इन अप्रोप्रिएट वे यू विल कम टू नो व्हेन सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. रीड द आंसर. सेल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आएगा तो सेल ऑफ गुड्स के तीनों कंडीशन लिखने का. पढ़ा? समझा? पक्का? हाँ अभी देखो एक काम करो ना 5 मिनट्स ब्रेक ले लो आप. और ज़्यादा है भी चाहेगा तो टेक 5 मिनट्स ब्रेक. उसके बाद में विल गो फर्दर. अराउंड 5-6 क्वेश्चंस आर पेंडिंग. मोनिल टेक ब्रीदर. Shall I proceed? Yeah. Read question number 9. आप मुझे क्या फाइंड करके देंगे सुनो. How much revenue should be recognized? There are 4 separate cases given. Think about it and try to get the answer. क्या how much revenue? हाँ और फिर टोटल करके दे दो. रफ में फेयर में मैं करवाऊँगा.
चलो आंसर चाहिए। सौम्या इधर, मुनील, मोक्षी, सौम्या आप 890, 850, 790, 9 lakhs, दो में से एक ऐड करके बोल दो। चलो सुनो, आंसर इज 8,90,000. I will read the question. Following information of BS Products Limited is given here. Correct? Goods of rupees 2 lakh sold to Den Limited on 20th March. But at the request of the buyer, goods are delivered on 10th April. Bolo, when can we recognize revenue? So we are in 22-23. So 20th March we can recognize entire 2 lakh rupees revenue. Any doubts? Say no, no. Agreed? On 15 Jan 2023, goods of rupees, come on, were sent on, clear? You know consignment business क्या होता है? एजेंसी बिजनेस, हम कंसाइनर होते हैं, कंसाइनी को हम गुड्स सेंड करते हैं, कंसाइनी विल सेल ऑन आवर बिहाफ. Agreed? So 3 lakh rupees were sent on consignment basis, out of which 20% are unsold, lying with the consignee as on 31st March. बोलो. So how much is sold? 80% sold. 80% सेल हो चुका है. So 2,40,000. 3 lakh into 80%. Do you agree with this? पक्का? 4 lakh worth of goods were sold on approval basis. सुना है? Goods were sent on approval basis. कस्टमर को हमने बोला ये गुड्स लो आप, अच्छा लगा तो रखना, नहीं तो वापस दे देना. अग्रीड? या नाउ टेल मी, उसको हम सेल मान सकते हैं कि सेल नहीं मान सकते हैं? It is not considered as our sale unless it is approved by the customer or stipulated time period is over. Agreed? So goods sent on sale or return basis is not our sale until approved by the customer or stipulated time period will get over. Clear? बोलो कितने का गुड्स हमने सेंड किया था? 4 लाख. कभी 1st December 22. The period of approval was after which they were considered as buyer sent approval for 75% गुड्स का अप्रूवल मिल गया अप टू 31st Jan. बराबर है? नो अप्रूवल रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग गुड्स टिल 31st March. आराम से मेरे को बोलो 4 लाख में से कितने का अप्रूवल आ गया? मतलब 3 लाख का तो सेल हो चुका है हमारा. 3 लाख का तो सेल हो चुका है हमारा. व्हाट अबाउट रिमेनिंग 25%? इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेल और इट इज नॉट अ सेल because 3 months are already over. Check, our sale was made on 1st December. So December, Jan and Feb, 3 months are over. We are in March end. So 3 months are over. So we have to assume this sale is also made. So our total sale will be here how much? Clear? Apart from the above, ये क्या लिखा है? BS Products Limited sells goods to
dealers also. One of the condition of sale is that interest is payable at 2% per month for delayed payment by the dealers. The percentage of interest recovery is only 10%, that is 50,000 on such overdue outstanding due to various reasons. During 22-23, company wants to recognize entire interest receivable 60,000. कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए बोलो? जितना सर्टन है उतने का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए. कलेक्शन शुड बी सर्टन. सो 50 करो टोटल. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? पक्का? एक बार पूरा आंसर डिटेल में रीड करो. केस 1. क्या चल रहा है? बोलो आस्था जी, क्या बोल रहे हो? फाइव डेज, 1 डे, फर्स्ट डे. हाँ वो भी रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट. और बोलो. होली तक तेरा पोर्शन हो जाएगा. मैं अटेम्प्ट है ना बेटा. हाँ, रक्षाबंधन का छुट्टी नहीं रहता. ऐसा देते थे. चलो जाते हैं. कुछ नहीं, बहुत डर लगता है मेरे को. 890 आंसर आया क्या सबको? चलो सुनो इधर. जोमेटो सुना है? जोमेटो वाले क्या करते हैं? फूड बनाते हैं कि डिलीवर करते हैं? अभी सुनो, आप लोग पेमेंट किसको करते हो? जोमेटो को फुल पेमेंट करते हो कि रेस्टोरेंट को थोड़ा करते हो और थोड़ा जोमेटो को करते हो? फुल पेमेंट हम किसको करते हैं? जोमेटो को. बराबर है. अभी सुनना, लेट अस से 100 रुपीज जोमेटो ने रिसीव किया. उसमें से 80 रुपीज का फूड है, 10 रुपीज डिलीवरी चार्जेस, 10 रुपीज जीएसटी. जोमेटो का इनकम कितना? सुनता ही नहीं है. एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा अभी. 100, हाँ बोलता है सर 3000 दिया है ना, उसमें से ले लेना.
₹100 जोमेटो ने रिसीव किया, ₹80 का उसमें फूड चार्जेस है, ₹10 डिलीवरी चार्जेस और ₹10 जीएसटी। ओके, आपके हिसाब से जोमेटो कमीशन लेता है कि जोमेटो पे करता है? एक बिल है ₹100 का, ₹80 फूड चार्जेस, ₹10 सर्विस चार्जेस मतलब डिलीवरी चार्जेस, ₹10 जीएसटी। जोमेटो का इनकम कितना? बोलो। ₹10। कौन सा 10? बस वो जोमेटो का इनकम रहेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है अपने पास, नाम क्या लिखा है? Zigato runs what? As per the arrangement, Zigato allows customer to food from and is responsible the delivery of food within stipulated time. During a particular year, it collects the money on orders made online as under. Total price for the food item 200 lakhs, delivery charges 60 lakhs, GST 40 lakhs, total 300 lakhs. समझा कि नहीं समझा? Zigato has received how much for the above orders from the customer, and the orders were delivered to the customer in stipulated time. How much revenue should be recognized by the restaurants? How much revenue should be recognized by Zigato for the? बोलो रेस्टोरेंट कितना रिकॉग्नाइज करेगा? 200 lakhs और Zigato 60 lakhs। और जीएसटी किसका इनकम रहेगा? समझा? पढ़ लो। पढ़ा? डन? क्वेश्चन नंबर 11, AB sells goods to, बोलो कभी, CD is having insignificant cash flow issues. Oh sorry, CD is having significant cash flow issues since last few months. CD कौन है? हमारा कस्टमर, बराबर है। ये कस्टमर क्या बोल रहा है कि उसने गुड्स परचेस कर लिया हमसे और फिर बोलता है मेरे कैश के बहुत इश्यूज हैं। However, it is trying to raise funding through bank loan to be able to run its operations in future. 5th May, CD is able to seek funding and is expected to be able to pay for the goods in future. At the time of sale, it is difficult for AB to ascertain whether it will be able to collect the amount from CD due to poor financial condition. Explain how the recognition of revenue should be done by AB. AB ने गुड सेल किया CD को 1 मार्च को और CD के पास बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो बोलो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनसर्टन है, नहीं मिलेगा, बराबर। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इन द अबाउ केस AB क्या लिखा है, पढ़ो।
should not recognize any revenue on 1st March until that uncertainty of recovery is clear. The revenue can only be measured by AB on 5th May 2021. The inventory transfer to CD until that date is required to be shown as inventory. Okay, fair enough. यहाँ तक clear? वो पूछ रही थी ना मोक्षी कि सर हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर वो गुड्स कहाँ रहेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होएगा. मैंने बोला ना कस्टमर स्टॉक विद कस्टमर. ये पढ़ो क्या लिखा है, वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करें. समझा? ये सेल नहीं है तो अनसोल्ड है, अनसोल्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 ए बी क्या लिखा है, गुड्स टू कम ऑन कभी अभी 1st Jan है. कितने का? After the sale was made, CD is having significant cash flow issues. It is trying to raise funding through bank to run its business operations. However, it is unable to do so. Has gone under liquidation on 15th March 2021. बंद हो गया 15 मार्च को. तो क्या करना चाहिए? At the time of sale, there was no reason for AB to believe it will not be able to collect so and so amount. करेक्ट? पहले क्या करना चाहिए? पहले सेल रिकॉर्ड करना चाहिए. कभी 1st जनवरी को और फिर 15th मार्च को बैड डेट्स का एंट्री करना चाहिए. डू यू अग्री विद दिस? पढ़ लो. सेल का एंट्री तो बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैड डेट्स कैसे होएगा? रिजल्ट बाकी है. अरे क्रेडिट सेल में बैड डेट्स होता है, याद हो गया ये. एंट्री बोलो. डेटर, ये डेटर है. डेटर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू मतलब कितने का सेल? 1st जनवरी को 2 लाख बराबर है 15th मार्च को बैड डेट्स हो गया. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 2 लाख. सच बोलो, समझा क्या? एवरीबडी एनी डाउट से नो. अभी ये देखो, एक एग्जांपल देता हूं, पहले सुन लेना. ये मिस्टर एक्स है एंड मिस्टर वाई, ये इसका फ्रेंड है. मिस्टर एक्स ने है ना 5 लाख रुपीस का गुड सेल किया वाई को, एंड वाई के साथ एग्रीमेंट किया कि आई विल रीपरचेज दी सेम गुड्स आफ्टर 3 months एट 6 lakhs. बरोबर है? ट्रांजैक्शन पीरियड बोलो, एंट्रीज कैसे करें? सेल का एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल. फिर 3 महीने के बाद यही गुड्स वापस लेंगे. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बट ऐसा कोई क्यों करेगा? आज 5 लाख में दिया और 6 लाख में वापस लेगा. हाँ बोल मोनिन. मीन्स देर इज सम फाइनेंशियल क्राइसिस. बराबर है? तो लॉजिकली स्पीकिंग ये क्या हुआ है मालूम है? इफ यू विल चेक द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट परचेस एंड सेल ट्रांजैक्शन. ये परचेस एंड सेल नहीं है. ये क्या है? इट इज अ फाइनेंस ट्रांजैक्शन. It is a finance transaction. समझा कि नहीं समझा? मतलब क्या हुआ मालूम है? मैं मिस्टर एक्स है ना, मैंने मिस्टर वाई के पास से 5 लाख रुपए का लोन लिया और सिक्योरिटी में क्या दिया? गुड्स.
कि भाई रख ले गुड्स 5 लाख का, 5 लाख लोन दे। फिर मैं बोला 3 महीने के बाद लोन वापस पे करूंगा, तो 3 महीने के बाद मैं वो गुड्स वापस ले लिए और 6 लाख रुपया दिया। 1 लाख क्या है? इंटरेस्ट। सेम गुड्स आर रीपरचेज, ये लैंग्वेज रहेगा फ्रॉम सेम पार्टी, so it is a finance transaction, it is not purchase and sale transaction. Clear? पढ़ो, ये क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। ऑन 2021 क्या लिखा है? मेसर्स सेल्स वॉट एट ऑफ टू मेसर्स, समझाइए। At the time of sale, Messrs. KJ has agreed to repurchase these goods back from Messrs. TH on 31st March at a price of बोलो 6 lakhs. Comfortable? पक्का? You are required to do what? Accounting for the above transaction in the books of Messrs. KJ. बोलो पहले 1 जनवरी को क्या हुआ है? सेल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, गुड्स बेचा उसका एंट्री नहीं है, लोन लिया उसका एंट्री करा, बैंक टू लोन 5 lakhs, अग्रीड? बोलो। फिर 3 मंथ्स के बाद पहले किसका एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। एंट्री बोलो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन में 1 लाख ऐड कर दिया। डू यू अग्री विद दिस? इट इज इंटरेस्ट ड्यू एंट्री। एंड फिर 31st मार्च को हम पे कर देंगे ये लोन, एंट्री लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 lakhs. इट इज नॉट परचेज सेल ट्रांजैक्शन, इट इज फाइनेंस ट्रांजैक्शन, लोन टेकन, इंटरेस्ट चार्ज, लोन पेड। सच बोलो, समझा गया एवरीबडी? एनी डाउट? दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ व्हाट? Accounting Standard 9 early bird session of advanced accounting. Understood? पक्का? चलो, thank you very much. All the very best for your results. Hope to see you again. God bless you all. Correct? Take care and study well. Bye. Thank you.